अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश 101 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश का पेपर जो है हमारा वो एमसीक्यूज़ बेस्ड है, ठीक है। तो हम इस वीडियो के अंदर जो है मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जितने एमसीक्यूज़ मैं कलेक्ट कर सकूँ आपके लिए। तो इसमें 200 प्लस एमसीक्यूज़ इस वीडियो में आपको मिलेंगे, यानी कि आपको इसके बाद किसी और जगह पे जाने की या परेशान होने की ज़रूरत इंशाल्लाह ताला नहीं पड़ेगी। इस वीडियोस को ही आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आपका इंग्लिश 101 का पेपर फाइनल टर्म का जो है वो तकरीबन उसकी 95% समझें कि तैयारी उसकी आपकी हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो है थोड़ा कॉन्सेप्शनल बेस्ड होते हैं एमसीक्यूज़, ठीक है, ग्रामर बेस हैं, तो इसकी आपको अपने हिसाब से तैयारी रखनी है। लेकिन एमसीक्यूज़ का वो जहाँ तक है बात, तो वो आपके जो हैं वो इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो हम इसका आगाज़ करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। तो पहला है कि इंडोनेशिया हैज़ एन डैश रेंज ऑफ जापानीज़ रेस्टोरेंट एज जापान हैज़ लॉन्ग बीन द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द कंट्री। ठीक है, इसमें आएगा इक्लेक्टिक। इक्लेक्टिक मीन्स वाइड। इंडोनेशिया हैज़ एन इक्लेक्टिक रेंज मीन्स वाइड रेंज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एनिमल एंड ह्यूमंस यूज़ द एवोब्रेशन ऑफ water to carry out heat that is absorbed from the sun or generated by metabolic activity and exercise। ठीक, फिर हमारे पास है Thai cuisine is one of the most romantic of the Asian cuisine as it still retains an element of mystery। देन है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग ये होती है, इसको आप ध्यान करें। फिर है कि व्हेन आई वाज कॉल्ड अपॉन टू गिव एन ऑन द स्पॉट स्पीच इन क्लास आई वाज सो सरप्राइज दैट आई स्टूड अप एंड रिसाइटेड नथिंग बट गिबरिश। गिबरिश हमें जो अंडरलाइंड वर्ड है इसका मीनिंग बताना है कि गिवन इसमें से कौन सा इसका एक्चुअल वर्ड होगा। तो नॉनसेंस, गिबरिश मीन्स नॉनसेंस, के कुछ भी वो बड़बड़ा गया, ठीक है जी। फिर हमारे पास है कि ग्रामेटिकल एरर हमने देखना है सेंटेंस में। जैसे मैनी स्टूडेंट्स हु हैव टू टेक आउट लोन्स हैव अ हैवी डेट लोड ऑन ग्रेजुएशन। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या एरर आ रहा है? इस सेंटेंस में है रन ऑन सेंटेंस है ये, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर अगर हम इसका देखें तो रन ऑन सेंटेंस है। रन ऑन सेंटेंस जो है वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो प्रॉपर नहीं होते, यानी कि उनमें ऐसे जुमले होते हैं जिनमें दो या उससे ज़्यादा सेंटेंसेस हों, ठीक है। लेकिन वो जैसे उनमें फुल स्टॉप की कमी है या कॉमा नहीं है, कंजक्शन नहीं है, ठीक है, बग़ैर इन चीज़ों के जो साथ जोड़ दिए गए हों, ऐसे सेंटेंसेस जो हैं रन ऑन सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे अगर एक जुमला है कि मैंने खाना खाया और मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, ठीक है, इसमें और नहीं लगा, इसमें कॉमा नहीं लगा, या इसमें कोई और ऐसा कंजक्शन नहीं लगा कि जो इन दोनों जुमलों को आपस में मिला रहा हो। मैंने खाना खाया एक हो गया और मैंने पानी पिया एक हो गया, ठीक है। इन दोनों जुमलों को लेकिन जोड़ने के लिए तो बीच में कुछ होगा ना, तो ग्रामेटिकली ये गलत हो गया। इसलिए या तो ये होता है कि मैंने खाना खाया और मैंने पानी पिया, तो ये सही जुमला होता है। या मैंने खाना खाया फिर मैंने पानी पिया, तो ये सही जुमला होता है, ठीक है। तो ऐसे जुमले जिसमें जो है कंजक्शन वर्ड या इस तरह का फुल स्टॉप है या कॉमा है, इस तरह की चीज़ मिसिंग आ रही है सेंटेंस के क्लॉज को दोनों को आपस में मैच करने के लिए, वो रन ऑन सेंटेंस कहला रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि द टेंशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड हैव प्रोड्यूस्ड अ ट्रबल्ड सोसाइटी। देन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो द बेस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। कॉज और इफेक्ट का बेस्ट रिलेशनशिप जो है इसमें ईट टू मच एंड गेट फैट, ये एक अच्छा जो रिलेशन बन रहा है वो यही चीज़ का बन रहा है। नेक्स्ट है द जज रिलीज हिम ऑन हिज ओन रिकग्निजन्स, ठीक है, अपनी इस जिम्मेदारी पे जज ने उसको छोड़ दिया। फिर है कि द ज्यूरी एक्सनरेट द मेयर ऑफ ऑल रॉन्ग डूइंग। फिर है दे कैन वॉच आइदर द डिटेक्टिव सीरीज और द फॉरेन मूवी, ठीक है।
फिर है कि which one of these means a vehicle for carrying a coffin. तो here's जो वर्ड है इसके मीनिंग होते हैं कि व्हीकल ऐसी गाड़ी जो कॉफिन को मैयत को लेकर जा रही हो, हेयर्स कहला रही होती है. Many people probably think that politeness is simply a social lubricant. ठीक है. अच्छा, इस सेंटेंस में जो है एडजेक्टिवल क्लॉज पे मार्क हुआ है, जबकि इसका सही जो जवाब है वो है नाउन क्लॉज. ठीक है. नाउन क्लॉज ये क्यों है? क्योंकि नाउन क्लॉज जो होता है ना, उसमें जो सब्जेक्ट हो और जो वर्ब हो ये होने चाहिए. तो इसके अंदर सब्जेक्ट भी है मैनी पीपल और वर्ब भी है थिंग. ठीक है. तो इस वजह से एक तो ये बात हो गई. ठीक है. और इसके अलावा जो है ये कि अगर ये एडजेक्टिवल क्लॉज होता तो इसमें WH वर्ड यूज़ हो रहा होता, विच, वेयर, हुज, होम. ठीक है. तो वो चीज़ भी नहीं है, तो इस वजह से ये नाउन क्लॉज है. ठीक हो गया. चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि ही वांटेड टू ज्वाइन द नेवी बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम टू. ठीक है. फिर है द पीपल स्क्रीम्ड एंड ran in different directions when the lorry crashed into the roadside stall. Okay, next है she employs a maid to do both the cooking and washing for her family. Next है कि it will be observed that in this grand opera Rimsky-Korsakov 6 times dealt with fantastic and but twice with real or historical subjects. ठीक है. Next है an eagle if pressed for food might carry off a small baby that had been left in the open unprotected area. Next है कि I want complete silence now while I try this experiment. Next है European cuisine always evokes a sense of nostalgia and romance. Next है कि one of the most beautiful things about Jakarta is its culinary wealth from both within the archipelago and around the world. Next, in 2005, superstar 50 Cent was placed on the Forbes Celebrity Top 100 list. इसमें हमने ग्रामेटिकल एरर देखना है, तो ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है कि इसमें जो है वो कहीं भी कॉमास लगे हुए अपनी मर्ज़ी के, तो ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है. फिर है कि यू डैश इट, यू थॉट इट, आई एम सिक ऑफ हियरिंग अबाउट problems in the country and never hearing about any solutions. Next है पाकिस्तान will win the world cup. तो ये सेंटेंस किस टाइप का है? तो इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं, ये ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट है. ठीक है. पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि फिर है कि दैट कार इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर अ बजट. तो इन टू एक्सपेंसिव यहाँ पे अंडरलाइंड होगा, इसका एंटोनियम हो गया इनएक्सपेंसिव. नेक्स्ट है कि विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग. तो कॉरिडोर की करेक्ट स्पेलिंग जो है ये आपको याद करनी होगी. फिर है कि विच सफिक्स कैन करेक्टली एडेड टू द रूट वर्ड इलेक्ट्रिक टू मेक अ न्यू वर्ड. इसमें IAN ऐड कर देंगे तो ये नया वर्ड बना देगा इलेक्ट्रीशियन का. ठीक है. नेक्स्ट है कि चूज़ द बेस्ट अवेलेबल सब्सटीट्यूट वर्ड फॉर द फॉलोइंग रूट प्रीफिक्स एनो. तो एनो से हम एयर का माइंड में आता है ना, एनुअल होता है, तो ये हम एयर पे मार्क कर लेंगे. ठीक है जी. कंप्लीट करना है सेंटेंस. तो कुड आई कम ओवर एट आइदर 3 or 4 o'clock आस्क्ड जॉन. देन है कि ब्रूनो ऑप्शन में से बेस्ट डिस्क्राइब सेंटेंस. ठीक है. कि क्या इसमें बेस्ट डिस्क्राइब करा था? ब्रूनो ऑन द अदर हैंड लाइक द व्यू दैट ही गेट्स फ्रॉम द लॉक केबिन अप इन द माउंटेन्स एंड ही एंजॉयज हाइकिंग इन द फॉरेस्ट. तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. ठीक है जी. फिर है कहते चिल्ड्रन आर टायर्ड डैश हैप्पी. चिल्ड्रन आर टायर्ड बट हैप्पी आफ्टर देयर ट्रिप टू द zoo.
करेक्ट सेंटेंस विथ प्रॉपरली प्लेस्ड कॉमास, इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है जिसमें कॉमास जो है वो प्रॉपर प्लेस किए गए हैं। तो इन सब को आप देख लें, इन सब में ये वाला जो सेंटेंस है, अनलाइक अदर्स देन कॉमा वी विल हैव कॉमा एंड अर्ली स्प्रिंग कॉमा आई एक्सपेक्ट कॉमा दिस ईयर। तो ये जो है ये प्रॉपर सेंटेंस है जहाँ कॉमास प्रॉपरली प्लेस्ड है। फिर क्या है कि करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। वही बात है कि प्रॉपर इसमें कॉमास आ रहे हो तो और वन टूथपेस्ट कॉमा अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स कॉमा इज जनरली द सेम एज अनदर। ठीक है, वन टूथपेस्ट एक बात ख़त्म हुई, देन अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट एक बात ख़त्म हुई और आगे जो है फाइनल स्टेटमेंट है। ठीक है, देन है कि एयरपोर्ट एक्सरे डिवाइसेस must have been designed more carefully in order to detect the more sophisticated forms of explosive materials that are now produced. Then है dash, do you ever, इन सब में से आंसर है इसका do you ever get tired of answering the same questions every day. Then items such as pointed scissors and ice skates are example of articles that are not permitted in our carry-on baggage when boarding an aircraft. ठीक है जी। फिर है कि Tom was arrested on Friday. 6 months later, he received a sentence of 10 years in prison for dealing illicit drugs. Illicit means illegal drugs. Middle Eastern restaurants often have a way of whisking you away to a far-off land of belly dancers, exotic spices, and intoxicating drink. ठीक है जी। फिर सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, तो है कि कंपेयरिंग द टू एसेज ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन, Zed's argument is more convincing than Ali's. तो ये जो है ये डैंगलिंग मॉडिफायर है। ठीक है, फिर है कि द टीचर कंपेयर्ड द पोएट टू अ बर्ड। बेस्ट आंसर आइडेंटिफाई करना विच इज़ नॉट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर आ जाएगा नेसाइंस। ठीक है, नेसाइंस ये इसका आंसर है। हाउ वोवल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द माउथ। The children at the deaf-mute center can neither hear nor speak. Nevertheless, crows flew. ठीक है, तो ट्रू सेंटेंस क्या है? इट इज़ अ सेंटेंस फ्रेगमेंट। Nevertheless, crow flew. She has been working on the manuscript for 2 years now. She keeps on trying to pass her driving test but fails every time. A look of disgust came over Nancy's face when the verdict was announced. All animals are born with innate or immanent qualities. Choose the phrasal verb most similar in meaning to wear. Wear से जो बहुत अजीब करीब मिलता जुलता सिमिलर phrasal verb है उसको करते हैं, तो wear के लिए हम have on इन ऑप्शन में से यूज़ करते हैं। फिर है कि ever since he married Jane, he's had a new loan on life. Best available substitute word for the following root prefix poly. Poly substitute word इसका है many. Then indicate correct form of verb in the sentence given below. ठीक है, verb की correct form इसमें बताना है कि he was told not to laugh at policemen. He was told not to
laughed, ed. I don't agree with you, but your idea certainly gives me food for thought. Okay? Food for thought. Sana says, there is nothing relaxing about chopping wood, sweating mosquitoes, and cooking over a wood stove. ये एक simple sentence है. Mahir dislikes sitting on the beach. He always gets nasty sunburn. ये एक compound sentence है. Mother said, you either help me prepare dinner or do you do your homework. ठीक है. Next, neither the man and their supervisor is to be blamed for the mishap. Would you like to have fruits or ice cream for dessert? Oh dear, I have left both my purse and keys in the other bag. Dash, do anyone object if I turn the heating down? A simple sentence may have more than one subject. That she can make him to the exercise but not stick to the diet. This sentence has one independent and one dependent clause. ठीक है, इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. फिर कि Zen left the class early. ये कंप्लीट सेंटेंस है. What is the effect in the following sentence? इस सेंटेंस में इफेक्ट क्या है? The mother bird gathers dried grass to build her nest. Gather dried grass. Gather dried grass जो है ये एक इफेक्ट है इस सेंटेंस का. फिर आता है कि I am returning the jacket to the store that is too small. The expression that is too small is a misplaced modifier. ठीक है जी. फिर है कि in Walmart we can find all necessities of life in various designs and mode. The professor from South Africa amazed the American students with her stories. The club has done their best to raise the money. ठीक है. Which of the following makes this construction fault? Singular to plural. ठीक है, ये singular से plural में जा रहा है तो the club has done their best. अच्छा जी. फिर है कि one way to correct few sentence and comma splices is to add a dash and a capital letter. तो यहाँ आएगा period मीन full stop, यानी कि full stop और capital letter ऐड किया जाता है few sentence को करेक्ट करने के लिए. अच्छा जी. फिर है कि we use the phrase without a doubt when we want to express 100% certainty. सेंटेंस आइडेंटिफाई करने की क्या ग्रामेटिकल एरर का है? तो वॉचिंग डिज्नी मूवीज द हीरोइंस ऑलवेज सेम टू बी लॉन्ग हेयर्ड एम्पल हाइटेंड ब्यूटीज. तो ये एक डैंगलिंग मॉडिफायर सेंटेंस है. फिर आगे के मिसप्लेसिंग ऑफ मॉडिफायर्स मे लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर. ठीक है, जो मिसप्लेसिंग मॉडिफायर की मिसप्लेसिंग हो वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं पढ़ने वाले के लिए. अच्छा जी. फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमा स्प्लाइसेस. तो इन सारे सेंटेंसेस को देख लें. इस सब के अंदर जो है ये जो है एक सही ऑप्शन है क्योंकि इसमें बात पूरी होने के बाद कॉमा है देन आई फेल आउट. ठीक है, बाकी दूसरों में इस तरह से नहीं हो रहा. फिर है कि आई हैव टू गो
I have to go. My mom says it's time for dinner. This sentence is example of run-on sentence. Choose the grammatically correct option from the list. तो इस लिस्ट में से ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि आई हैव टू गो, माई मॉम सेज इट्स टाइम फॉर डिनर। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आपके पास आ गया कि एप्रोप्रिएट कंजक्शन फिल करना है। नो सूनर डिड आई एंटर द क्लास रूम देन द बॉयज स्टूड अप। I bought a book from a book fair that cost rupees 500 to me. ठीक है, क्या है कि choose the option which the word in commas refer to in the given sentence. यानी कि ये जो वर्ड आ रहा है कॉमा में, ये किसको रेफर कर रहा है? तो फ्रॉम अ बुक फेयर दैट कॉस्ट, तो बुक फेयर में से उसने एक बुक ली ना जो कि 400 की उसको मिल रही है, तो दैट जो है वो बुक को रेफर कर रहा है। फिर है कि Tobias sat by the telephone for hours hoping that Beatrice would call. ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है, किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है? तो इसमें हम देखते हैं तो आता है कि ing एंड टू फ्रेगमेंट्स। फिर है कि बीजे Vukovic, author of Claus, the best written novel of the disaster genre, will speak at a night. How I become an author meeting. Which one of the following word is value word? ठीक है, तो इन सब में से जो है वो बेस्ट जो है वो वैल्यू वर्ड है। फिर है कि hopefully John will give in to despair and abandon his hopeless project. Here hopefully is misplaced adverb. फिर है कि my fingers were injured so my sister had to write the note for me. Pakistani council met his counterpart in London. It's been snowing since Christmas morning. The wall is covered with ivy. A stone path leads to the wall. The above construction is comma splice. Basically, there are three elements which make sentence effective. करेक्ट ऑप्शन चूज करना एक्सप्रेशन का, तो ऑल वर्कड हार्ड फॉर हिज एग्जाम्स, ये कंप्लीट सेंटेंस है। Truth may perhaps come to the price of a pearl that shows best by day. तो हमें यही पूछा गया है कि वर्ड इन कॉमा रेफर की, जो वर्ड कॉमा में है वो क्या रेफर कर रहा है? तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पर्ल की। ठीक है, प्राइस ऑफ द पर्ल की बात हो रही है, तो ये दैट इस ही को रेफर कर रहा है। फिर है कि ग्रामेटिकल एरर देखना है इसमें, तो 3 हैज़ बिन सरप्राइजिंगली लिटिल रिसर्च एंड एनोरेक्सिया nervosa, only 15 comparative trials published in the last 20 years. ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है, प्रॉपर सेंटेंस नहीं है यानी कि। फिर इसमें फिर एरर मालूम करना है, तो created in the 1970s, some people think space shuttle are too old and should be scrapped. ये dangling modifier sentence है। फिर the type of conjunction that is used in compound sentence is coordinating conjunction. I don't agree with you, but your idea certainly gives me food for thought. ये हम पहले भी कर चुके हैं। They love English weather, don't they? ठीक है। The people whose names are on the list will go to the camp. ये एक this sentence contains a noun clause. ठीक है।
Due to reduction in foreign investment, the leather goods business is declining day by day. The service at this restaurant is excellent. Moreover, the food is delicious. A perpetual state of indolence will bore you miserably. Here slowly is अच्छा sentence क्या है कि we ate the lunch that they had brought slowly. Here slowly is misplaced adverb. What type of order is necessary to use while attempting to persuade a reader? Order of importance is necessary. Which of the following symbol is used to represent a decision in a flowchart diagram? Diamond. ठीक है. Which choice has the closest meaning in the word given in bracket? I will bracket में है look it up in the library. ये जो bracket में look it up है इसका जो closest meaning इस option में से क्या हो सकती है? look it up का मतलब होता है search for it, ढूंढना. ठीक है. फिर आ गया कि which of the following is correct option for the following construction? The room is locked. No one has key. ये एक fused sentence है. फिर आता है कि it takes a lot of inspiration and hard work to come up with a new creation in art and pointing field. She knew his affection was nothing more than a show of affectation. Since he was late for meeting. ठीक है. गिवन एक्सप्रेशन में क्या करेक्ट ऑप्शन है इसमें? ये एक फ्रेगमेंट सेंटेंस है. फिर आ गया कि सेंटेंस को आप केयरफुली पढ़ें और जो क्लोजेस्ट मीनिंग आ रही है कैपिटल लेटर जिस सेंटेंस में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में जो वर्ड इस सेंटेंस में लिखा है उसकी क्लोजेस्ट मीनिंग इस ऑप्शन में से क्या है? तो मोस्ट ऑफ अस आर differential towards those whose social position we believe to be above ours and look down on those whom we consider social. मिसिंग है आगे थोड़ा सा. अच्छा, हमने जो है ये डिफरेंशियल का मीनिंग बताना है. तो डिफरेंशियल का मतलब है इसका जो हम मीनिंग यहाँ में से देखते हैं वो है रिस्पेक्टफुल. ठीक है. कि हम उनको ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखते हैं कि जो सोशली पोजीशन वाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऊंचे होते हैं. ठीक है. तो ये हम रिस्पेक्टफुल इसमें यूज़ करते हैं. फिर हो गया कि डैश बिकॉज जेन हैज़ नॉट caught any trout yet, she is going to change the bait she is using. ठीक है. My parents have been married for 49 years. The word groups beginning with when and which are called dependent fragment. ठीक है. Matthew and Tilly had a fight, so Matthew looked for a new best friend. Here, looked for means tried to locate. ठीक है. किसी को ढूंढ रहा है ना, नए दोस्त की तलाश में है, looked for. ठीक है. तो यहाँ के ऑप्शन में से आ जाएगा try to locate. फिर है ब्रैकेट में जो वर्ड है उसके करेक्ट ऑप्शन इनमें से सेलेक्ट करना है कि ये क्या है. द मैटर वॉज लेफ्ट इन एबियंस. एबियंस जो है ये एक नाउन हो गया. द क्रिमिनल हैड अ वेरी नोटिसेबल स्कार ऑन हिज फेस. एवरी प्रोग्रामर मस्ट लर्न फ्लो चार्टिंग एंड रियलाइज इट्स इम्पॉर्टेंस. Bottom line means the main point. I bought a book yesterday. Because the exchange fatigue involved in running a marathon, most runners must train for several months before they are sufficiently conditioned.
Because of the extreme fatigue, अच्छा repeat हो गया, sorry. You frequently see this kind of violence on television. ठीक है, अब फिर है कि following makes construction faulty. कौन सा शिफ्ट टेस्ट में कौन सी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन को फॉल्टी बना रही है? द ओनली वर्ड दैट वी वर एबल टू डिस्टिंग्विश आर हॉर्स एंड कार्ट, यानी कि ये पास्ट टू प्रेजेंट में लेकर जा रहा है, तो इसकी वजह से ये फॉल्टी बन रहा है सेंटेंस. फिर हो गया कि डू यू हैव एनी कोडिंग शीट लेफ्ट. अब इसमें जो है आपने बताना है कि सेंटेंस एंड रीड द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. इन ग्रीक मिथोलॉजी मर्करी वाज द मैसेंजर ऑफ द गॉड्स. तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. ठीक है, फिर है कि आई विल बी बैक इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई. वी केम टू एन अबंडेंट हाउस. ये अबंडेंट जो है वो एक एडजेक्टिव है. टेक द करेक्ट ऑप्शन. आई इंटेंडेड टू मैरी हर. ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास है कि डैश कैनेडा हैज़ लीगलाइज्ड हेम्प फार्मिंग. तो इन सब में से एज यहाँ पे सूटेबल है कि एज कैनेडा हैज़ लीगलाइज्ड हेम्प फार्मिंग वी कैन एक्सपेक्ट टू सी पल्प एंड पेपर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हेम्प वेरी सून. America has been called the affluent society because of its abundance of goods and services. जो कैपिटल लेटर में है इसका क्लोजेस्ट मीनिंग यहाँ से हमें निकालना है, तो वो प्रॉस्परस है एफ्लुएंट का. फिर है कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रोग्रामर इज़ रिवील्ड वाया हिज और हर फ्लो चार्टिंग स्किल. ट्रू फॉल्स है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट. नेक्स्ट है कि अनदर वर्ड फॉर प्रोग्राम एरर इज़. प्रोग्राम एरर के लिए एक दूसरा वर्ड जो है वो बग इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, 3/4 ऑफ द स्टूडेंट बॉडी आर. 3/4 of the student body are against the tuition hike. I hurt myself when I was playing tennis. Everybody in the class has completed his or her homework already. Ali says there is nothing relaxing about chopping wood, sweating mosquito and cooking over a wood stove. ये जो है एक कंपाउंड सेंटेंस है. ठीक है, मार्क नहीं किया हुआ लेकिन कंपाउंड है. अच्छा जी, देन है कि सिलेक्ट द आंसर दैट बेस्ट एक्सप्लेन द मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम. आइवरी टावर. आइवरी टावर एक ईडियम है और इसको ये जो मीनिंग दे रहा है बेस्ट वो ये है कि रिमोट फ्रॉम एवरीडे अफेयर्स. ठीक है, the suffix in the word fatalism and Methodism has the meaning state quality and action. ठीक है, suffix fatalism and Methodism का जो suffix है वो जो मीनिंग दे रहा है वो स्टेट क्वालिटी और एक्शन के हैं. फिर है कि those thugs should be arrested if they will continue to terrorize the residents here. Next है कि to solve the maze, Thomas had to think outside the box, which was not easy for them. To correct this sentence, them should be replaced by him. ठीक है, यानी कि Thomas had to think outside the box, which was not easy for him. थॉमस की बात है तो हिम आना है, तो ये जो सेंटेंस है ये इसके लिए ठीक है. दिस इज़ माई फाइनल वोकेशन प्लान. आई एम गोइंग टू सैन फ्रांसिस्को फॉर अ वीक. अ प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट नाउन मस्ट एग्री इन पर्सन, नंबर, जेंडर और ऑल ऑफ अबव. देखिए ऑल ऑफ अबव. ठीक है, प्रोनाउन एंड इट्स डिसेंडेंट नाउन मस्ट एग्री इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर. ठीक है, writing is done in a series of steps and stages.
a skill that comes with practice, defined as a process. ठीक है, तो ये तीनों ही qualities है. तो writing is all of the above, all of the below. अच्छा जी, फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट. तो इन तमाम सेंटेंसेस में ये सेंटेंस करेक्ट है. बज़बी इज़ अ क्लच. बज़बी जो है एक क्लच है. सेमीकोलन इज यूज टू सेपरेट डायरेक्टली कोटेड मटेरियल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सेमीकोलन तो नहीं यूज़ किया जाता सेपरेट करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. फिर है कि ऑल्दो ही इज़ 80 माई ग्रैंड डैड वॉक्स 10 miles डेली. तो इसमें से कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया जाएगा? ठीक है, तो इसमें से कॉमा यूज़ किया जाएगा. ही इज़ 80 के बाद कॉमा, देन माई ग्रैंड डैड वॉक्स. अच्छा जी, फिर है कि टू बी अ गुड राइटर यू मस्ट लर्न टू यूज़ वर्ड्स एंड expressions that are suitable to the subject. Now that the Coast Guard is watching closely, people are having and sailing better on the bay. The sentence that express the main idea or point of a paragraph is called a topic sentence. In writing, punctuation takes the place of pauses, gestures, rising tone, and other such features of speech. अच्छा तो रिपीट हो गया. अच्छा जी, फिर है कि टॉपिक सेंटेंस should not unhide too many unrelated ideas. Which of the following is a requirement of clear and well written sentence? ठीक है, तो ये देखा, ग्रामेटिकल रूल फॉलो होना चाहिए, प्रॉपर पंक्चुएशन होना चाहिए, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग, ये भी होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है. The topic sentence is the most important sentence in a paragraph as it indicates what the paragraph is going to discuss, and for this reason it is topic sentence. The watch was laying on the table. It had dashed there for a week. तो यहाँ पे आएगा लेइंग है, द वॉच वॉज लेइंग, तो यहाँ पे लेड होगा. लेकिन इधर ना मतलब जो इसका वी यू का सॉफ्टवेयर है उसके तरह ही कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है, तो लेट को लेन मेंशन है. अगर इनकेस आपके पास भी ऐसे ही आता है, कोई भी ऑप्शन आ रहा है उसमें लेड है, तो आपने LAID लेड है तो वही आपने लेना है, और अगर नहीं है तो ये इस स्पेलिंग के साथ ही आप इसे ओके कर दीजिएगा, क्योंकि ये LID लाइड है, ये तो झूठ बोलने के मीनिंग्स हो गया. ठीक है, तो ये मीनिंग चेंज हो जाएंगे. ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का मिस्टेक है, तो अगर इनकेस ऐसी स्पेलिंग आ जाती है तो ये आप सेलेक्ट कर लें, वरना LAID लेट की एक्चुअल स्पेलिंग है. ठीक है, फिर है कि द मीनिंग ऑफ बिजी बी इज डिलीजेंट. बैड वेदर इज श्योर टू अफेक्ट हर हेल्थ. इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल्स द कंपनी, इट मे वोट फॉर अ रेज. Who assumes that language change is at least partly random? तो ये एक थे क्रॉफ्ट ने ये अज्यूम किया था कि लैंग्वेज चेंज इज़ एट लीस्ट पार्टली रैंडम. लोअर योर वॉइस और द अदर्स विल नो ऑफ योर प्लान, अदर विल नो ऑफ आवर प्लान, जुनेद टोल्ड मी. करेक्ट सेंटेंस करना है तो ये तो आपको ग्रामर वगैरह का चीज़ों को पता होना चाहिए. ठीक है, commas is or are used for completing the fragments, separating independent and independent clause, correcting misplaced modifier. ठीक है, ये तमाम काम हो रहे होते हैं कॉमे को यूज़ कर. The sentences are considered fragments when they are missing either a subject or a verb. ठीक है, तो जैसे पुराने MCQs में भी काफ़ी सेंटेंसेस है जिसमें हमने बताया कि सेंटेंस फ्रेगमेंट है या नहीं है. जो एरर ने पूछा तो उसमें यह कि जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या वर्ब मिसिंग होगा वो सेंटेंस फ्रेगमेंट कहला रहा होता है. ठीक है. ओ डियर, आई हैव लेफ्ट बोथ माई वॉलेट एंड सेल फोन इन द अदर बैग. Now that the Coast Guard is watching closely, people are behaving and sailing better on the bay.
Walking under a ladder is considered to be bad luck. Commas are used to separate directly quoted materials from the rest of the sentence. An apostrophe s is not needed in plural noun. Though we like most of our neighbors, there are few we can't get along with. The pronouns my, your, and their are the possessive case forms of I, you, and they. Okay? The pronouns my, your, and their are the possessive case forms of I, you, and they. A paragraph is a series of sentences about one main thought, idea, or point. True. Pakistan, Quran, Jane Austen, and Thames are example of proper noun. She will is a contraction for she will. The expression time and again is a clutch. The topic sentence states the main idea of the paragraph. All the viewers trashed the new Tom Cruise film. Which of the following category of expression does the word trash belong to in this sentence? तो trash जो है वो slang category से belong करता है. I was thirsty and I poured myself a full glass of juice. He usually travels to Lahore by train. A comma is also used to separate introductory material from the rest of the sentence. True. A writer's goal in writing a paragraph should be all of the above, all of the below. To support the point, to make a point, and orderly arrangement of material. We had too much snow last winter. A group of related words containing a subject and verb is called clause. Even if things get difficult, I will not waver or hesitate to stand up for you. The boys were lost in the third desert. I was standing on the top floor, but they couldn't resist the incredible desert. Here incredible is adjective. We need some sugar. We are almost completely out of it. Which of the following sentence is correctly punctuated? Okay, today is Tuesday डे के बाद कॉमा, देन मंथ के बाद जो डेट है मंथ डेट, इसके बाद कॉमा और लास्ट में ईयर. Slang is used by limited social groups and by its nature is informal. Which one of the following is not an adverb of time? Monthly time से related है, yesterday, formerly सब टाइम से related है, लेकिन cleverly जो है वो नहीं है. I like to lie on a couch. Yesterday, I lay there as long as I could. The children had to look after themselves. This is reflexive pronoun. Jane always gets really embarrassed when speaking in front of an audience. Which of the following sentence shows correct pronoun agreement? इसमें जो है ये last. Each of my students required 5 chances to pass their driving test. Coarse means not refined. The uncertain meaning of a pronoun will lead to a confusing sentence.
A topic sentence contains a topic and a controlling idea. जी, तो इसके साथ ही हमारा इंग्लिश 101 के जो MCQs हैं वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं। हमारा MCQs का जो सेक्शन है इंग्लिश 101 के लिए ये हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको मैं जो हूँ ये भी समझाऊँ कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं, मॉडिफायर्स क्या होते हैं, स्लैंग क्या होता है, अगर आप ग्रामर सेक्शन भी समझना चाह रहे हैं जो मैं लाइक बहुत शॉर्टली और इजीली अगर आपको मैं बता सकूं कि बड़े बड़े लेक्चर्स तो मौजूद होंगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट में चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना सकूं। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।